Now the next topic is hard and soft water. Now what is this hard water and what is this soft water? पता है किसी को? Can anybody tell me? No. Okay. We all know that water is very important compound for the existence of the living organisms on the earth, and it is present in the many forms. It is present in the oceans, it is present in the rivers and ponds and lakes and glaciers, but all the waters, and it is present in the form of rainwater also. But we know that we cannot use all the waters, like that sea water. We cannot use the sea water, it is not useful for us, है ना? So how we can divide the water? So depending, अब इसको किस बेस पर पहले तो हम डिसाइड करेंगे. We know that natural water contains dissolved salts also. कोई भी जो हमारा वाटर होता है वो बिल्कुल ऐसा तो नहीं होता है, वाटर है तो वाटर ही होगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा. It contains a natural salt dissolved in it. So depending upon its behavior towards soap solution, we can divide the water into two categories, or we can classify the water into two categories: hard water and soft water. Now what we will say, that the water which will produce lather with the soap solution readily is called as soft water. For example, distilled water, rainwater, demineralized water, these all water we consider that these can form lather with the soap. अगर इस वाटर को आप सोप के साथ मिक्स करोगे या सर्फ डाल के मिक्स करोगे तो ये उसके लादर बना देगा, उसके झाग बन जाएंगे बहुत अच्छे से. So that is why this type of water is suitable for household purposes, like for bathing or cleaning or laundry purposes. And second type of category is hard water. So hard water is what? The water which do not produce lather with soap solution readily is called as hard water. वो water जो soap solution के साथ lather नहीं बनाता easily, that is called as hard water. For example, the sea water, river water, well water, tap water, these all are the examples of hard water. Now, why the water is soft and why the water is hard? Soft water तो पता ही है हमें कि water होगा generally, और उसके अंदर कुछ थोड़े बहुत हो सकते हैं हमारे minerals present हो, या हो सकता है नहीं भी present हो. But hard water क्या है फिर ये क्यों नहीं बनाएगा लादर? क्या होता है? हार्ड वाटर कंटेन्स द सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. हार्ड वाटर वो होता है जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं. दैट कैन बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, दैट कैन बी कैल्शियम सल्फेट, दैट कैन बी कैल्शियम क्लोराइड, और दैट कैन बी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, दैट कैन बी मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड. जनरली यही होते हैं. एंड दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ सोप, which is called as sodium stearate. You all know that soap is what? Soaps are the sodium salts of higher fatty acid. ये आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है ना? सोप्स हमारे क्या होते हैं? सोडियम और पोटेशियम के हायर फैटी एसिड के सॉल्ट होते हैं. तो यहाँ पर मैंने लिया है हमारे लिए सोडियम स्टेरेट, विच इज अ सोप. नाउ इफ वी विल मिक्स दिस सोप सोल्यूशन विद वाटर विच इज हार्ड, तो अगर वाटर हार्ड है तो या तो उसमें कैल्शियम प्रेजेंट होगा या फिर मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा, साथ में कुछ और भी प्रेजेंट होगा, बट हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट calcium and magnesium only. So when what will happen when we will mix this soap solution in the hard water? So because of this calcium and magnesium, this soap solution will convert into calcium stearate and magnesium stearate, and both these salts are insoluble in water. दोनों ही क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं, और ये वाटर में नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारा सोप सॉल्यूशन है वो लादर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा. So that water which do not produce lather with the soap solution, that is called as hard water. इसमें क्या होगा? मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयन जो है वो नीचे बैठ जाएंगे, यानी वो प्रेसिपिटेट बना लेंगे, जिसकी वजह से हमारा लादर बन नहीं पाएगा. उसके अलावा जो हार्ड वाटर है वो हमारे स्टीम बॉयलर्स जो होते हैं उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है. कैसे नुकसान पहुंचाता है? उसकी लेयर पर कलेक्ट हो जाता है और उसे कोरोड कर देता है, रस्टिंग हो जाती है. अगर हार्ड वाटर को हम अपने बॉयलर्स में वार्म करेंगे तो वार्म करने के बाद वो उसके ऊपर कैल्शियम की लेयर छोड़ जाता है, जिसकी वजह से उसमें रस्टिंग हो जाती है इजीली. तो खैर वो सब जो इसके जो भी डिसएडवांटेजेस हैं वो तो हम बाद में पढ़ेंगे हार्ड वाटर के. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द टाइप ऑफ हार्डनेस. अब सॉफ्ट वाटर को हम भूल जाते हैं, सॉफ्ट वाटर के बारे में हमें कुछ स्टडी नहीं करना है. वी हैव टू स्टडी हार्ड वाटर इन डिटेल नाउ. पहले थोड़े से डिफरेंसेस देख लेते हैं.
Hard water is which is rich in minerals, and soft water contains very few elements. That elements only which are important for us. Hard water is not effective with the soap, but soft water is easily effective. It can form the lather. ठीक है. Hard water leaves spots on the washed dishes after they are dried, but soft water do not leave any kind of any spot on the dishes after they are dried. Hard water contains minerals like magnesium and calcium. Soft water contains only sodium ions. सोडियम आयन होते हैं जो हमारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लाइक सोडियम क्लोराइड हो गया सपोज. सो सोडियम क्लोराइड इज व्हाट, अ कॉमन सॉल्ट. कोई लॉस नहीं होता हमें उससे. तो और भी जो सोडियम के सॉल्ट हैं उससे हमें कोई लॉस नहीं होता. तो सॉफ्ट वाटर में वो हो सकते हैं. हार्ड वाटर समटाइम्स प्रेफर ड्रिंकिंग वाटर. समटाइम्स प्रेफर मतलब कभी कभी कोई वाटर जो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं हो उसे हम पीने में यूज कर सकते हैं. बट सॉफ्ट वाटर इज गुड फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेज. और समटाइम्स अगर उसमें कुछ ऐसी इम्प्योरिटी आ जाए तब हम बोलते हैं कि it is not good for drinking purposes, but otherwise generally it is good for drinking purposes. So what we can say, hard water sometimes prefer drinking water and soft water sometimes not prefer drinking water. The examples of hard water are groundwater, like deep wells, and the examples of soft water is rainwater. Hard water can convert the hair and skin into dry. उससे अगर आप स्किन अपनी क्लीन करेंगे या हेयर अपने वॉश करेंगे तो ड्राई हो जाते हैं बहुत ज्यादा. और सॉफ्ट वाटर से क्या रहता है, सॉफ्ट रहते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस between hard water and soft water. Now, how we can measure the hardness of the water? For this, we have two units. One is ppm, parts per million, and second is milligram per liter. But the common unit is ppm. More the ppm, more hard will be the water. 0 ppm, water is very soft, and as the ppm increases in the water, it means hardness is also increasing. Clear? जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हम उसे हार्ड कंसीडर करेंगे. Now, hardness of water is further divided into two types: temporary hardness and permanent hardness. Now, what is this temporary and permanent hardness? See, both type of hardnesses, whether that is temporary or permanent, is due to the salt of magnesium and calcium. But temporary hardness is the hardness which is means temporary hardness. We can say the temporary hardness of water is the water where the bicarbonates of magnesium and calcium are present. मीन्स जब वाटर के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स, यानी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, the formula of magnesium bicarbonate is MgHCO3 whole twice, and the formula of calcium bicarbonate is CaHCO3 whole twice. अगर ये दोनों वाटर में प्रेजेंट होते हैं तो दैट वाटर इज कॉल्ड एज टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर या टेम्परेरी हार्ड वाटर. Why it is called as temporary hard water? Because this type of hardness can be easily removed by boiling the water. If you will boil the water will break down this. These compounds will actually break down into calcium carbonate, water, and carbon dioxide. So क्या उससे होगा? कैल्शियम कार्बोनेट इज अ प्रेसिपिटेट, वो नीचे बैठ जाएगा, उसे हम इजीली फिल्टर करके निकाल सकते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, वी ऑल नो. एंड वाटर का तो कोई नुकसान है ही नहीं है. सेम वे, अगर आप मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट वाले वाटर को बॉईल करते हो, सो इट विल ब्रेक डाउन इनटू मैग्नीशियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. मैग्नीशियम कार्बोनेट इज अ प्रेसिपिटेट, वो सेटल डाउन हो जाएगा, फिल्टर करके आप रिमूव कर सकते हो. सो दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ हार्डनेस इज कॉल्ड एज temporary hardness, because we can easily remove this type of hardness. Second is permanent hardness of water. Permanent hardness of water क्या है? When the magnesium chloride and sulfide or the calcium chloride and sulfide are present in the water. मतलब जब मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होंगे तो हम वाटर को बोलेंगे कि टेम्परेरी हार्ड है. और अगर उसी मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड या सल्फाइड वाटर में प्रेजेंट होंगे तो हम उसे बोलेंगे परमानेंट हार्डनेस है, बिकॉज दिस टाइप ऑफ हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय सिंपली बॉइलिंग. क्लियर? इसे परमानेंट और टेम्परेरी कहने का बस यही पर्पस है. अदरवाइज पहचान क्या है कि टेम्परेरी हार्डनेस इज अ hardness which is due to the presence of bicarbonates of calcium and magnesium, and permanent hardness of water is due to the presence of chlorides and sulfides of magnesium and calcium. Clear? आई बात समझ में या नहीं आई? And temporary hardness is also called as carbonate hardness, because carbonates की वजह से है ना, तो कहीं कहीं कार्बोनेट हार्डनेस भी
लिखा हुआ मिलता है. And permanent hardness is also called as non-carbonate hardness. Okay. Now, what we have to do? Because water is hard and hard water is not good for us, and for laundry purposes, for cleaning purposes, for drinking purposes. So, we need to remove the hardness of the water. So, the process of the removal of hardness from the water is called as softening of water. There are different methods of for the softening of water which we will study in the next class.